Hello students, welcome back to our computer session. We have start chapter number 5, that paragraph and page formatting in Word 2016. We have learned about changing text case and display text as superscript and subscript. I have already explained in our session as well as in Google Meet. So if you have not seen, if you have not done, so please go to that video and watch first. Okay, now we will going to start our next subtopic, that is formatting paragraph. What do you mean by formatting paragraph? When we have to write in the next paragraph, we have to press a enter key. Okay, and we can format a paragraph by changing its alignment. So now let us learn what are alignment. Okay, so what are alignment? Let me tell you. Refer to the placement of text with respect to left or right margin. Okay, select the text. Okay, so what is in the alignment? So what we will do in alignment? So alignment is to, अब मैं alignment कैसे, कोई भी text को left या right को हम light margin पे ला सकते हैं. Okay, so which alignment are there? Alignment left, alignment right, center and justified. So where we can find alignment? Over here. These are all alignment. Okay, you can see these are all alignment. Okay, this is center, this is alignment to left, this is alignment to right, and this is justify. If you will keep the cursor over there, then you can read it alignment your concept with the left margin. आपके left में जाएगा margin. Okay, and center तो center में रहेगा, and left towards right towards right, and justify is equally distributed. Okay, now what we will see first line. Okay, as usual I will what select it. Okay, then okay, so this is the left alignment. The next paragraph is, this is center alignment. देखो center alignment में कैसे आया? This is in the center. Now next, this is alignment right. तो ये right में आ गया पूरा. Okay, then next is justify. Okay, justify is used for, it places the text in such a way that it is equally distributed to left and right both. Okay, देखो ये है, this is the left, this is center. Okay, then this is right alignment, and this is justify. Okay, so all we can, now we have known what is alignment. Okay, next is ident. So in, now we will learn about indent. Indent, this is called indent. See. Okay, so what is written about indent? Indent is the distribution of paragraph from either to left या लेफ्ट मार्जिन में और राइट मार्जिन में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो. ओके, खुद से कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट. ओके, लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है? इट हेल्प इन स्पेसिफाई हाउ फार वी नीड टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. मुझे कितना लेफ्ट लेना है, ये इंडेंट है. ओके, फर्स्ट लाइन इंडेंट. ओके, लेट अस सी फर्स्ट लाइन इंडेंट.
देखो मुझे कितना लेना है, आई विल डिसाइड द हाउ आई विल, देखो ये ठीक है, मैं आई विल डिसाइड द हाउ मच आई विल टेक टू द लेफ्ट साइड. ओके, एंड देन इट इज लेफ्ट इंडेंट. दिस इज द फर्स्ट इंडेंट. दिस इज द right indent. See, okay, I will decide where I have to put the paragraph. See, I am only moving this. Okay, and suppose I have selected this paragraph. Okay, then हैंगिंग इंडेंट, मुझे सिर्फ इसे ही लेना है. ओके, राइट. सो आई विल डू अबाउट इन हैंगिंग इंडेंट. बेसिकली आइडेंटिटेशन is used in moving the cursor, moving the paragraph right to left. Okay, now next is setting आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो अब हम सेटिंग kरेंगे. ठीक है, ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया. इस पे बहुत सारे स्पेसेस है, तो हाउ विल गो इन सेटिंग. फर्स्ट ईयर लेआउट. ओके, दिस इज अबाउट सेटिंग इंडेंट एंड स्पेसिंग. ओके, सो आई विल चूज इंडेंट. सी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं. देखो, ओके, अब मुझे राइट लेना है. ओके, तो दिस इज बेसिकली यूज इन मूविंग द पैराग्राफ राइट टू लेफ्ट. सी, ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंडेंट. ओके, देन नाउ इज लाइन स्पेसिंग. ओके, so where is line spacing used? is the amount of space between the line. अगर हमें आप अगर आपके क्वेश्चन पेपर देखते हो तो what you can see that we have adjusted in such a way that all the paper is looking in format. उसे बोलते हैं format. क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं पेपर में आपको इधर वन मीन्स serial number 1 you're in left side, serial number 2 in your right side or in the center. We are not doing that. We are formatting the page. Okay, so how we will do? We are also using line spacing. कुछ space नहीं रहना, तो we are using line spacing also. Okay, so here you can see spacing. This is the line spacing. So what you have to do? Select the text. So first you have to select the text in between these two paragraphs. Okay, देन लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे बिफोर पहले. ओके, अगर 0 कर दिया तो इतना. ओके, बिफोर एंड आफ्टर. सो वन थिंग यू कैन सी हियर ओवर हियर, इस पे ये बीच में ज़्यादा स्पेस है, तो मुझे स्पेसिंग कम करना है. ठीक है, सो हियर बिफोर आई कैन डू right. ओके, और अगर लाइन स्पेसिंग को आप कैसे देखते हो, जब तक ये 0 नहीं आता है, ठीक है, मतलब आपका लाइन स्पेस, मतलब लाइन के बीच में स्पेस है. ओके, so student, this is for all about the subtopic of formatting paragraphs, indentation and line spacing. I hope you like this video, as well as please do the practical if possible, or watch the video carefully. Okay, thank you everyone.